Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Rizwan Gohar, and today's talk will be on the fluid management in critical phase of dengue fever. So, as we know that the critical phase remains for 24 to 48 hours. In dengue fever, whenever the fever is settled after 3 days or maybe 4 days of initial onset of illness, after the fever is settled, then the critical phase may arise in some patients of dengue fever. So this critical phase is very important as regards the management of fluid is there, because in critical phase there can be severe volume loss, and this volume loss can lead to hypovolemia, hypotension, a state of shock, and multi-organ failure. So going towards the pathophysiology of this critical phase. So the pathophysiology, if we look at this diagram, you can see as a result of dengue fever, as a result of cytokine release, there is vasodilatation and stasis. So these pores you can see in the vessels, they go apart so that these pores they become much wider. As a result, there can be increased fluid permeability, and there will be fluid loss from the intravascular to extravascular space, as well as there can be leakage of the proteins from these vessels. So extensive fluid loss can lead to hypovolemia, decreased perfusion of the body organs like liver, kidney, brain, and all the body organs and cells. So there can be a state of shock which is called hypovolemic shock, because that is due to fluid losses from the intravascular volume to extravascular space. So the management goal will be according to this condition. So we have to replace these fluid losses in a certain way that would prevent hypotension as well as fluid overload. So there has to be a judicious use of these fluids. So if these fluids are in lesser amount, there will be hypotension and shock. And if we'll be giving the excessive amount of the fluids, there can be hypertension, there can be fluid overload, and there can be pulmonary edema. So that will further aggravate the condition of the patient. So we'll not be going into the detail of different types. Dengue fever can be asymptomatic, subclinical, it can be symptomatic, it can be with critical phase or it can be without critical phase. So how do we pick up critical phase? We'll be seeing in the next slides. So here a word is written that dengue hemorrhagic fever is a dynamic disease. It means the progression of this illness varies from hours to hours. Initially, there is a febrile phase in which there is high grade fever, body aches, myalgias, vomiting, headache, backache, retroorbital pain. So, as the fever is settled in certain patients, there can be onset of this critical phase. So, there can be extensive fluid losses that can lead to shock. However, in certain patients, there may not be any critical phase. So, this existence of critical phase, only these patients will be called as having dengue hemorrhagic fever. It is not the hemorrhage that is used to label them as dengue hemorrhagic fever. It is the fluid losses in the critical phase that can happen in certain patients. So dengue hemorrhagic fever is a misnomer. It is not meant for hemorrhage. So it should be called like dengue leaky fever. So whenever there is leaking of the fluid proteins, that will be called as dengue leaky fever or dengue hemorrhagic fever. So the presence of critical phase is very important. If there is presence of critical phase, this is dengue leaky fever. No critical phase, no leaky fever, no hypotension, no shock. Followed by critical phase, there is the convalescent phase, when all the dynamics they return to the normal shift, and there in this phase there will be reabsorption of the fluid from the extracellular space to intravascular space.
the fluid which has already been kept on leaking from the intravascular volume to extravascular volume, that will be again reabsorbed. So important thing is that if we have used the fluid judiciously during the critical phase, so that will cause no harm to the patient. So if the patient has been given surplus amount of fluids, so all that fluid will be reabsorbed into the vessels, and they can be fluid overload. That can be very lethal because that will be causing burden on the heart, lungs, ultimately leading to pulmonary edema, and that can be a state of shock as well. So judicious use of fluids is very important. So coming to the fluid management of febrile phase, this is only febrile phase. In febrile phase, if the patient is active alert, there is no vomiting, is he can take orally, then you have to encourage the oral fluids. And if the patient is vomiting or dehydrated and is not taking anything orally, then you have to give the IV fluids. From the third day onward, you have to be cautious about dengue leaky fever. So how do we diagnose, how do we come to know that dengue leaky fever is starting? We'll be discussing in next slides. So coming to the types of fluid, in infants who are less than 6 months of age, the choice of fluid is N by 2 with 5% dextrose water. Reason being is that infants, they are prone to be they are prone to become hypoglycemic. That's why we add 5% dextrose in normal saline. And in infants above 6 months and up to the adults, will be using the normal saline, will not be including dextrose in that. Adequate physical rest and use of paracetamol for fever. So we have to avoid all the NSAIDs and steroids because they can cause bleeding. So like every critical illness, the monitoring during dengue fever is the monitoring for temperature, because in these patients, unlike the other illnesses, when the fever is settling, there are chances for a patient to go into critical phase. So temperature recording is important. Pulse rate is very important to monitor the patient who is going into the shock. So the pulse rate may rise, or definitely it will rise when a patient will be entering into shock. Blood pressure is very important. So a patient with shock will be having hypotension or decreasing systolic and diastolic blood pressure. And pulse pressure is very important in critical phase of dengue fever. The peculiar feature of pulse pressure in dengue leaky fever is narrowing of pulse pressure. For example, if a healthy patient has a blood pressure of 100 by 70, there will be narrowing of the pulse pressure. The difference between systolic and diastolic pressure will decrease. So coming to a difference of 20 mm of mercury, that will show that patient is going into the critical phase, and ultimately the patient will have a shock-like condition. Capillary refill time is also seen. If the capillary refill time is prolonged, then there is a state of shock. You can do it either pressing the nail and then releasing it and checking that how many seconds it is taking that the discoloration is coming back to the normal. If that is 2 seconds, that is normal. If that is 3, 4 or even more, that will show a state of shock. Similarly, intake output recording is very important. Urine output is very important because we have to see if there is adequate perfusion of the kidneys or not. A good urine output means that should be between 0.5 to 1 ml per kg per hour. A decreased urine output means that kidneys, they are suffering due to hypovolemia, so we need to increase the amount of fluid that is being given to the patient. So if there is polyuria, like urine output is too much high,
that means that we are giving surplus amount of fluid, so we will have to reduce that in order to prevent fluid overload in the convalescent phase. The most important thing in dengue critical phase is falling platelets. So every patient who is having a platelet level less than 1 lakh should be monitored vigorously, because in every patient of dengue leaky fever or dengue hemorrhagic fever, the platelet counts are less than 1 lakh. So you have to suspect dengue leaky fever in a patient whose platelets are dropping below 1 lakh. Likewise, measurement of hematocrit is very important. As a result of hypovolemia, fluid losses, the hematocrit, the concentration of RBCs that will rise. So a rising hematocrit from the baseline is very important in showing that the patient is probably entering into dengue leaky fever. So when to suspect this critical phase, as we have talked earlier, at critical phase may start after the fever is settled, but we have to see what are the different parameters uh, that when do we suspect this critical phase. So as we have talked about, so if the platelets they are dropping below 1 lakh, suspect the critical phase. If hematocrit is rising more than 20% means, for example, if a patient has a baseline hematocrit of 35 and you repeat the hematocrit in the evening or maybe 12 hours after initial hematocrit value, from 35 it rises to 37, and the next value rises from 37 to 40 and then 42. So this difference from 35 to 42 means 20% rise in hematocrit, 20% hemoconcentration. So that will tell you that patient is entering into critical phase, and you have to be meticulous about the monitoring, about the treatment. So if this patient who is having rising hematocrit will be left untreated and the shock will not be managed, there can be irreversible stage and there can be severe multi-organ failure. Coming to the next important parameter, that is the narrowing of the pulse pressure. As we have talked earlier, narrowing of pulse pressure with a difference of 20 between systolic and diastolic, that is also showing that patient is having leaking somewhere at the capillary level and the patient is maybe entering into shock in coming hours. So these 2 or 3 points, they are very important in picking up a patient with critical phase. There are certain labs that will help you out. A patient who is entering into critical phase, that is, there can be pleural effusion on the chest X-ray. There can be streak of fluid in the angles on the chest X-ray. That is also due to fluid leaking. It can be ascites due to volume loss from the intravascular compartment, and there can be decrease in serum albumin and cholesterol levels, because they can also leak from the vessels like fluids. So you have to get these x-rays or ultrasound chest to document pleural effusion, or get an ultrasound abdomen done to see the ascites. So what should be our treatment targets? Treatment targets. Coming to the treatment targets. So, what are the treatment targets in management of critical phase of dengue fever? All right. So, while managing a patient with dengue critical phase, we have to maintain an optimal amount of the urine output. If the patient is conscious, you can just make sure that you collect the urine of the patient continuously during the critical phase, to just to label that what is the urine output of that patient. So it should be around 0.5 to 1 ml per kg per hour. If that is so, it means you are adequately hydrating the patient with your fluids. And if that
output falls below 0.5 ml per kg per hour, it means that the fluid being given is lesser in amount, that is not adequate to perfuse the kidneys. And if that urine output is above 1 ml per kg per hour, it means we are giving surplus amount of fluid. We have to reduce that. So the target pulse pressure should be around 30. So with the optimal fluid management, it should rise from the narrowed pulse pressure that was initially 20 to 30. So this is the target pulse pressure. So vital monitoring during critical phase should be 1 hourly, and a patient who is going into shock like hypotension, cold clammy skin, tachycardia, swear, drowsiness, unconsciousness, then we have to monitor the vitals every 15 minutes. No, what should be the admission criteria in dengue leaky fever? A patient who is having abdominal pain, tenderness, persistent vomiting, cold peripheries, signs of pleural effusion, ascites, bleed, altered conscious level, hepatomegaly. Hepatomegaly is a very consistent feature of dengue leaky fever. So a patient with hepatomegaly should be admitted and should be suspected and should be investigated for dengue critical phase. A rise in hematocrit 10% from the baseline should raise the suspicion of dengue critical phase and a platelet level below 1 lakh. So if a patient is having one or more than one of these features, uh, he or she should be suspected, should be admitted, and should be further managed according to the situation. अच्छा, calculation of fluid quota during the critical phase. एक चीज़ याद रखें, the fluid that will be given during critical phase, whether the critical phase is for 15 or 16 hours or up to 48 hours, there's a lot of variation about the duration of critical phase in every patient. It can be 12 hours, it can be 48 hours. So as um, a general rule, we take it about 48 hours. The fluid that will be given to the patient, that should include both oral and both IV. So we have to make sure that we calculate both oral and IV, and the total amount that will be calculated for a certain patient for a certain weight, that should not exceed a certain limit that we will be calculating from a formula. So that should include both oral and IV fluids. It should not be separate. So the formula is as follows. It is a maintenance plus 5% of body weight. So we'll take some example. All right. So in pediatrics, the fluid calculation for maintenance fluid in general patients are that for first 10 kg we calculate fluid with 100 ml per kg for first 10 kg. For next 10 kg it is calculated for 50 ml per kg, and for the next, how many kgs are there, we calculate is by 20 ml per kg of the body weight. सो पहले 10 किलोज़ के लिए 100 ml से फ्लूइड लेना है, सेकंड 10 किलोज़ के लिए 50 ml, और उससे ऊपर जितना भी है 20 ml, और एंड पे इन सबको ऐड कर लेना है. दैट विल बी दी मेंटेनेंस फ्लूइड ऑफ अ पेशेंट, ऑफ अ जनरल पीडियाट्रिक पेशेंट. प्लस उसमें ऐड करना है आपने 5% ऑफ द बॉडी वेट डेफिसिट, जो दैट वी आर सस्पेक्टिंग दैट दिस 5% of the body weight, these are the losses from of the fluid from the intravascular volume to the extra vascular compartment. So ये 5% मेंटेनेंस में ऐड करना है. So maintenance plus 5% of the body weight. 5% is comes almost 50 ml per kg से अगर fluid calculate करें तो 5% body weight बनेगा. एक पेशेंट है, उसका वेट 22 kg है. इसका मेंटेनेंस ऊपर निकाला हुआ है ना 1540 ml, जो कि फर्स्ट 10 kg के लिए 100 ml पर kg से, नेक्स्ट 10 के लिए 50 ml पर kg से, नेक्स्ट
10 के लिए 20 ml per kg. So the total aggregate is 1540 ml, and 5% deficit is 50 ml into 22 kg, that is 1100 ml. So this 1540 plus 1100, the total is 2640 ml. So this 2640 ml fluid has to be given during the critical phase for this patient who is 22 kg. So this fluid has to be given during the whole critical phase, whether that remains for 24 hours, 34 hours, or maybe 48 hours or more than that. So we will not be exceeding this fluid limit. We will not be giving any extra fluid than this. We have to remain within this limit. We can give lesser amount of fluid out of this 2640, but will not exceed this limit in any case, because if we'll be exceeding this limit, there can be fluid overload in later stages, and there can be severe consequences of fluid overload. On the other hand, the red highlighted area, you can see that this volume should not exceed 4600 ml. So if a child who is 60 kg, the amount of fluid that will be very high. So the upper limit for fluid management is 4.6 liter or 4600 ml. So 4600 ml को भी exceed नहीं करना, चाहे formula से जो मर्जी निकले, चाहे 6 liter निकले, 7 liter निकले, but we have to be within limits, that is fixed. 4600 is the maximum limit of the fluid that can be given to a patient. इस 2600 ml में oral भी included है, IV भी included है. So you have to keep a separate record for oral plus IV. दोनों मिला के देखने हैं, it should not be exceeding this limit. शॉक के कुछ फीचर्स हैं. स्वेटिंग है, एब्डोमिनल पेन है, रेस्टलेसनेस है, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, कोल्ड क्लैमी स्किन, prolonged capillary fill time, tachycardia, nerving of pulse pressure. अगर इनमें से कोई भी फीचर आ रहा है, that is a feature of shock. अब इस फ्लूइड को स्टार्ट कैसे कराना? अब like we have talked about this patient who is 22 kg and the total amount of fluid is 2600 ml during the whole critical phase. तो उसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे? Now this child is above 6 months of age, so the choice of fluid will be normal saline. That has to be given during the critical phase. So अब इस जो 2600 ml में से हमने fluid निकालना है, will be starting with a lesser volume during the initial critical phase. So the lesser volume on your left hand side, you can see that is 1.5 ml per kg per hour. अगर 22 kg का बच्चा है और आपने 1 घंटे का fluid निकालना है, so multiply this 1.5 into 22 into 1 hour. ये कितना बनेगा? फॉर एग्जाम्पल ये तकरीबन 40 ml फॉर एग्जाम्पल बनता है. सो दिस 40 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन हैज़ टू बी गिवन ओवर 1 hour इन स्लो इन्फ्यूजन. और द ट्रीटमेंट गोल वो हमेशा याद रखते हैं. द ट्रीटमेंट गोल इज़ टू मेंटेन एन एडिक्वेट यूरिन आउटपुट बिटवीन 0.5 to 1 ml per kg per hour, to maintain a optimal pulse pressure, that is 30 millimeter of mercury. अगर ये जो दो चीज़ें आ रही हैं और पेशेंट इज़ हीमोडायनामिकली स्टेबल, हार्ट रेट नहीं बढ़ रहा, ब्लड प्रेशर ठीक है, so you can keep that patient on the same fluid for the next of the hours, for the next of the hours, for the next of the hours. But you have to check your treatment targets every hourly. अगर उस पेशेंट का यूरिन आउटपुट 0.5 से फॉल करता है, आप इस फ्लूइड को अगले घंटे में बढ़ा दें, इसको 2 ml per kg per hour कर दें, 3 से कर दें, 4 से कर दें, ऐसा ऐसा. अगर उसका यूरिन आउटपुट 1 से बढ़ रहा है, तो आपने फ्लूइड की इन्फ्यूजन रेट को स्लो करना है. यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, फ्लूइड बढ़ाएंगे. यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, तो फ्लूइड को कम करेंगे टू प्रिवेंट फ्लूइड ओवरलोड. सो ये अब आप लेफ़्ट साइड पे देखें, अब अपवर्ड जाती हुई जो कर्व है, जिस भी वॉल्यूम पे पेशेंट मेंटेन हो जाए, द ट्रीटमेंट टारगेट्स आर मेंटेन, पल्स प्रेशर ऑफ 30 इज मेंटेन, यूरिन आउटपुट ऑफ दिस मच क्वांटिटी इज मेंटेन, तो वहाँ पे आपने फ्लूइड रोक लेना. और जहाँ पे लगे कि वो ट्रीटमेंट टारगेट्स से नीचे जा रहा है, तो फ्लूइड आप बढ़ा देंगे. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्फ्यूजन दैट कैन बी गिवन, दैट इज़ 7 ml
पर केजी पर और या 8-9 तक, बाजू का 10 तक भी जा सकती है, बट दिस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड कैन बी गिवन ओनली फॉर अ फ्यू आवर्स। ये ज़्यादा आवर्स के लिए देंगे तो आपका फ्लूइड ख़त्म हो जाएगा, और फ्लूइड तो आप लगा नहीं सकते। बट इफ़ यू सी इन अ पेशेंट के जिसमें 7-8 ml पर केजी से भी आपके ट्रीटमेंट टारगेट्स यानी ब्लड प्रेशर, उसका पल्स प्रेशर, यूरिन आउटपुट मेंटेन नहीं हो रहे, और आपको लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में आपको 7-8 पे ही मेंटेन करना पड़ेगा, इससे भी बढ़ाना पड़े, तो आपने आपने यू हैव टू इंटरवीन। जब आपको लगे कि इस मैक्सिमम इन्फ्यूजन रेट पे भी उसको इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, ट्रीटमेंट टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे, अब आपने क्या करना है? नो, व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू इंटरवीन विद कोलाइड्स। कोलाइड लगाने हैं। कोलाइड लार्जर मालिक्यूल होते हैं, दे विल रिटेन इंट्रावास्कुलर फ्लूइड फॉर अ फ्यू आवर्स। नॉर्मल सेलाइन से ज़्यादा देर ये सर्कुलेशन में रहते हैं, एंड दिस पीक ऑफ लीकेज रिमेन्स फॉर ओनली अ फ्यू आवर्स। सो आप उसको कोलाइड दे सकते हैं। कोलाइड कैसे देने, विल बी सीइंग इन नेक्स्ट स्लाइड। अब 7 ml पर केजी के बाद आपने देखा है कि जी इसका ट्रीटमेंट टारगेट्स बेहतर हो रहे हैं, पेशेंट का आउटपुट भी बेहतर हो रहा है, टैकीकार्डिया भी बेहतर हो रहा है, यूरिन आउटपुट भी ठीक है, और हेमाटोक्रिट भी स्टेबल हो रहा है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता इस इन्फ्यूजन रेट को कम करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट टारगेट्स। ट्रीटमेंट टारगेट्स आपने इस फ्लूइड को उस तरह मैनेज करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता फ्लूइड को कम कर दीजिए, और देखें 48 आवर्स में उसकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट बिल्कुल वही आ गई है मिनिमम जो कि स्टार्टिंग में थी। सो इस पीक को किसी तरह आपने क्रॉस करना है। पहले वाला पेशेंट वो था जो कि आपके पास आया बुखार के साथ, बुखार उसका सेटल हुआ, और आपने देखा कि पेशेंट अब क्रिटिकल फेज में जा रहा है। आपने शुरू से क्रिटिकल फेज को पिक कर लिया और उसको मैनेज करना शुरू किया, फिर ऐसा ऐसा बेहतर हुआ। ये वो पेशेंट है जो कि हु हैज स्पेंड द फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ द क्रिटिकल फेज एट होम, जो कि घर में ही था, उसको बुखार भी हुआ और उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब हुई तो एक दिन घर पे ही रहा। और इसका मतलब है एक दिन तक अगर उसको फ्लूइड ना मिले, अनट्रीटेड रहे, तो वॉल्यूम लॉसेस विल बी मोर। सो दिस पेशेंट मे कम अक्रॉस इन अ स्टेट ऑफ शॉक इन एमरजेंसी। इसको जो पेशेंट प्रोफाउंड शॉक के साथ घर से आता है और एमरजेंसी आके लैंड करता है, जिसका क्रिटिकल फेज आधा गुजर चुका होता है, ये पेशेंट शॉक में होता है, इसमें आपने फ्लूइड का इन्फ्यूजन रेट ज़्यादा से स्टार्ट करना है। इसमें 1.5 ml पर केजी पर आवर से स्टार्ट नहीं करना, यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम 10 ml पर केजी पर आवर, क्योंकि इसमें ज़्यादा वॉल्यूम लॉसेस हो चुके हैं, एंड यू हैव टू रिप्लेनिश द फ्लूइड लॉसेस मोर एग्रेसिवली बिकॉज दिस पेशेंट इज गोइंग इनटू शॉक। सो 10 ml पर केजी से फ्लूइड वैसे ही कैलकुलेट करना है, बट इन्फ्यूजन रेट एट स्टार्टिंग विल बी 10 ml पर केजी पर आवर। सो 10 ml पर केजी पर आवर का मतलब है अगर 22 kg का बच्चा है तो 10 ml इंटू के जी, दैट इज़ 22 इंटू 1 आवर, तकरीबन 220 ml फ्लूइड इसका बनेगा, 1 घंटे में देना है। और ट्रीटमेंट टारगेट्स वैसे ही मेंटेन करने हैं। सो फ्लूइड को कम ज़्यादा अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट टारगेट्स जो कि हमने शुरू में डिस्कस किया, उसके हिसाब से आपने मेंटेन करना है। थोड़ी सी बिजी स्लाइड है, इसमें देखें देर आर टू टाइप्स ऑफ शॉक इन डेंगी लीकी फीवर। लेफ्ट साइड पे जो है मेरे ग्रेड 3 शॉक है, और राइट साइड पे ग्रेड 4 और प्रोफाउंड शॉक है। ग्रेड 3 शॉक का मतलब है कि शॉक है लेकिन नैरो पल्स प्रेशर है, बहुत सिवियर वाला शॉक नहीं है। तो इसकी और उसकी मैनेजमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। जो ग्रेड 3 का शॉक है जिसमें नैरो पल्स प्रेशर जैसे 20 का आ गया है, लेकिन ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड हो रहा है, हार्ट रेट भी रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें आपने मैक्सिमम इन्फ्यूजन रेट 10 ml पर केजी से स्टार्ट कर देना है उसकी जो नॉर्मल सेलाइन है, और उसको ग्रेजुअली टेपर करना है अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट टारगेट्स। ऑन द राइट हैंड साइड व्हेन द पेशेंट कम्स इन द इमरजेंसी विद द प्रोफाउंड शॉक मीन्स ब्लड प्रेशर इज अनरिकॉर्डेबल, पल्स कैनॉट बी रिकॉर्डेड, दैट इज सिवियर शॉक। इसमें आपने you have to be very aggressive in fluid management. You will give a bolus of normal saline, stat bolus 20 ml per kg से stat bolus लगाएंगे उसको, then you will be checking the blood pressure. अगर blood pressure फिर भी नहीं आ रहा, unrecordable है, you will give a second bolus, normal saline के 2 bolus आपने लगा देने, ठीक है। अगर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, then you have to give the colloid.
कोलाइड कौन से डेक्स्ट्रॉन 40 है या 6% स्टार्च के नाम से आता है। डोज क्या है कोलाइड की 10 ml पर केजी पर आवर, 1 घंटे में देना है, 10 ml पर केजी से देना है। सो ये इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम रिटेन करेगा। सो कोलाइड आपने रिपीट करना है, पहले 2 दफ़ा नॉर्मल सेलाइन देना है, ब्लड प्रेशर नहीं आता तो कोलाइड देना है। अगर फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आता और आप देखें पेशेंट की हेमाटोक्रिट बढ़ रही है, देन यू कैन रिपीट दी कोलाइड एज वेल। और अगर रिस्पांस आ गया है नॉर्मल सेलाइन के बोलस देने से या कोलाइड देने से, तो फिर आपने वो लेफ़्ट साइड वाली स्लाइड आपने ये इनिशियल मैनेजमेंट नॉर्मल सेलाइन के बोलस दे के कोलाइड दे के, देन यू विल बी स्विचिंग टू दी रेगुलर फ्लूइड मैनेजमेंट विद 10 ml पर केजी से, और उसको ग्रेजुअली अकॉर्डिंग टू रिस्पांस आपको बढ़ाते रहेंगे। अगर किसी भी स्टेज पे लगे, वैसे तो डेंगू वाले पेशेंट्स में हेमाटोक्रिट बढ़ती है ड्यू टू हीमो कंसनट्रेशन, लेकिन अगर किसी फेज पे लगे दैट पेशेंट की हेमाटोक्रिट जो कि 40 थी और एकदम से वो 35 पे आ गई है या 30 पे आ गई है या 28 पे आ गई है, एंड द पेशेंट इज़ बिकमिंग पेल, इट मीन्स देयर इज़ प्रॉब्लम। ऑल्दो दिस इज़ रेयर, लेकिन इसका मतलब ये है इफ़ हेमाटोक्रिट इज़ falling, it means there is some concealed hemorrhage that can be abdominal hemorrhage, that can be elsewhere in retroperitoneum as well. So उस पेशेंट को जिसकी हेमाटोक्रिट फॉल करेगी बढ़ने की बजाय, ब्लीड के लिए देखना है, कंसील्ड हेमरेज के लिए देखना है, और उसको फिर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करनी है जो कि पेशेंट पे हो रहा है। What are the indications of colitis? Dextran 40 or 6% starch. In the management of shock after 2 crystallite bolus, जैसे कि पिछली स्लाइड में देखा, if you have given 2 boluses of normal saline with a dose of 20 ml per kg सर, उसके बाद भी ब्लड प्रेशर रेज ना हो, then you will be giving the colite. सेकेंडली जो हमने बात की उस पीक की जहाँ पे 7 ml पर केजी से इन्फ्यूजन रेट आ रहा था, अगर वो मैक्सिमम इन्फ्यूजन रेट वाला वॉल्यूम हमें ज़्यादा देर तक देना पड़े, तो इट मीन्स कि आप जितना भी फ्लूइड दे रहे हैं दैट इज़ नॉट रिटेनिंग इनसाइड द इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट। तो उस स्टेज पे भी ताकि फ्लूइड हमारा ख़त्म ना हो जाए, हमने कोलाइड दे देना है, दैट विल रिटेन द इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम फॉर कपल ऑफ आवर्स। ये दोनों डेक्स्ट्रॉन 40 और 6% स्टार्च अगर किसी पेशेंट को देने हैं तो मेक श्योर टू गेट दी ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग, बिकॉज दे कैन कॉज हिंड्रेंस विद ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग लेटर, अगर आप बाद में पेशेंट सैंपल करते हैं। कितनी दफ़ा दे सकते हैं डेक्स्ट्रॉन 40 और कितनी दफ़ा दे सकते हैं 6% स्टार्च? डेक्स्ट्रॉन 40 कैन बी गिवन 6 doses in 48 hours, or 6% starch can be given 10 doses within 48 hours. This is the maximum amount you can give during the critical phase. So this normal saline once given remains in circulation only for 22 hours. Colite that will remain for a longer time. That's why colite is given if there is no response to normal saline or prescribed. ये वो सारे पैरामीटर्स हैं, चार्ट्स हैं डेंगू फीवर वाले पेशेंट और क्रिटिकल फेज वाले की आपने मैनेजमेंट, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर, CRFT, कैपिलरी फिल टाइम, एक्सट्रीमिटीज़ देखनी है, वार्म और कोल्ड, रेस्पिरेटरी रेट, यूरिन आउटपुट और प्लेटलेट काउंट, ये आपने उसकी मॉनिटरिंग जो है। ये एक पेशेंट है जो कि 9 तारीख को आया हमारे पास, 7 years ओल्ड है, 26 kg वेट है, और ये पहले दिन आया जनाब हमारे पास। डे 2 पे बुखार था और WBC काउंट थे इसके 6800, और उसके बाद डे 3 पे भी फीवर था और WBC काउंट उसका फॉल कर गया जैसे कि डेंगू में करते लेस देन 5000, और डे 4 पे भी विदाउट फीवर है। अब ये जब डे 4 पे विदाउट फीवर है, यहाँ पे क्रिटिकल फेज में स्टार्ट और मे नॉट स्टार्ट, वो कैसे पता चलेगा? वो मॉनिटरिंग से पता चलेगा, हेमाटोक्रिट से पता चलेगा, पल्स प्रेशर से पता चलेगा, ब्लड प्रेशर से, यूरिन आउटपुट से। तो जैसे ही फीवर सेटल हुआ है डे 4 पे, जो कि आप रेड हाईलाइटेड एरिया में देख सकते हैं, उसके बाद से मॉनिटरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये सोचना है कि जी अब बुखार ठीक हो गया और पेशेंट अब ठीक हो गया, ऐसे नहीं है। द डिटीरिएशन इज़ ऑलवेज आफ्टर वंस द फीवर इज सेटल।
लेकिन इस पेशेंट में फॉर्चुनेटली डे 5 पे विदाउट फीवर था, लेकिन ये क्रिटिकल फेज में एंटर नहीं हुआ क्योंकि इसका 12 जून को इसका अगर देखें हार्ट रेट भी ठीक है, पल्स प्रेशर भी ठीक है, कैपिलरी रिफिल टाइम भी ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ भी वार्म है, यूरिन आउटपुट भी ठीक है। सिमिलरली डे 6 पे भी इसके सारे पैरामीटर्स ठीक थे। सो दिस वाज अ केस ऑफ सिंपल डेंगी फीवर. This was not dengue leaky fever. This was not dengue hemorrhagic fever. There was no critical phase in this dengue fever क्योंकि इसमें लीकिंग ही नहीं हुई, इसमें हेमाटोक्रिट ही नहीं बढ़ी. ये स्लाइड देखें. इस पेशेंट जो कि 10 तारीख को आया, डे 3 पे फीवर के साथ था, लेकिन इसके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, लैब्स के भी और वाइटल्स के भी. 11 तारीख को आप देखें फीवर है और टेंडर लीवर आना शुरू हो गया. टेंडर लीवर का मतलब है कि डेंगी क्रिटिकल फेज स्टार्ट हो गया. और डे 5 पे देखें अभी भी फीवर है. डे 6 पे देखें तो अब उसको कोई फीवर नहीं है. और लेकिन जो आप डे 5 पे देखें तो उसका पल्स प्रेशर था 30 विच वॉज नॉर्मल, यूरिन आउटपुट भी ठीक था 1.8. लेकिन डे 6 पे उसका यूरिन आउटपुट 12 तारीख को जो उसका पल्स प्रेशर है वो 30 से 20 पे ड्रॉप कर गया. इसका मतलब है ये पेशेंट यहाँ पे क्रिटिकल फेज में एंटर हो रहा है. सो दिस इज़ द बेसिकली एंट्रेंस इनटू द क्रिटिकल फेज. और पता कैसे चला? हेमाटोक्रिट जो है ना फॉल करने से, हेमाटोक्रिट फॉल करने से पता चला, सॉरी हेमाटोक्रिट राइज करने से पता चला. पल्स प्रेशर फॉल की है 20 पे है और हेमाटोक्रिट देखें उसकी ऊपर 35 सी 35 विच वॉज नॉर्मल और ये 42 तक आ गया है 12 तारीख को. सो राइजिंग हेमाटोक्रिट एंड डिक्रीजिंग पल्स प्रेशर, ये दो चीज़ें थी जिस पर पता चला कि दिस पेशेंट इज़ एंटरिंग फ्रॉम डेंगी फीवर टू डेंगी लीकी फीवर और critical phase of dengue fever. So this is the entry into the critical phase. So अगर इस पेशेंट को जो कि क्रिटिकल फेज में एंटर हो चुका है, if this patient is left untreated without optimal fluid management and if the shock lasts for more than 4 hours, that will lead to liver failure and prognosis is only 50%. If there is liver plus renal failure, prognosis is only 10%. And if there is also pulmonary involvement, prognosis is extremely grave. So we have to be very meticulous about fluid management, about the initial diagnosis of critical phase, and judicious use of all these fluids. There is no role of platelet transfusions that are not meant to be given in any case until a few exceptions are there. That can be done with the consultation of your senior. There is no role of inotropic support. If you will be giving inotropic support like adrenaline, dopamine, Wellbutrin to these patients, they will give you a false impression of improving blood pressure. But actually, the reason for going into shock is not cardiac failure, it is hypovolemia. So you have to address hypovolemia, not you have to give the inotropic support that will give a false impression of improving blood pressure, but the shock will be going on at the root cause is hypovolemia. So you have to replace the fluid. You do not need to give the inotropes. There is no role of steroids in the management of dengue fever. Any questions? If they are there, I will more than happy to answer that. Thank you very much. Take care of yourself and stay safe during Corona.